I guess now we are live. Let me just see. Okay, good. Hello, hello. We Am are I live. audible? Am I? Let me just see. That's great. That's great. Let me just configure some of the things. I need to manage the video, okay? So, hold on. Just give me a moment, okay? Give me a moment. Mm-mm-mm. Yep, that's great. I just need a moment, okay? Let me just configure some things. Just a second, okay? Yeah, that's great, I guess.
Okay, so let's start with learning Docker. Um, Welcome to the stream. If you have not ever watched my streams yet, so do consider sharing the video, and we can get started with it. Okay, so हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? We were there at and okay, ignore the mess. I'm trying to install the game. Yep. I'm trying to install a game. Okay, so yeah. We had to complete this section, images, compose and storage, so we can straightforward do this thing. Okay, that's good. This will be good to go. कोई दिक्कत की बात नहीं होगी as such. Okay, so now we can start with this tutorial. Okay, here. How many images are available on the host? So we can see it as Docker images, and on this host we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Got 9 images. Next, what is the size of the Ubuntu image? Ubuntu image का size है करीब 1. It has 45 MB. Yep, simple. Now it's pulling a new image. We pulled a new image. What is the tag on the newly pulled Nginx image tag? Let's again run the command. So now we can see that there is a new image, right? 1.3 is Alpine. Inspect the Docker file in web app color directory. That's the base image used in the Docker file. Inspect the Docker file in the web app color directory. एक सेकेंड. Oh shit, was it visible? Okay. गड़बड़ हो गई तो I'll just
make it a bit that's nice. Oh no. Grep. You can either open the file using v or using commands just cat, more, less, vim, etc. Then look for the from instruction or search it for it directly using grep. I from root web app color. Acha. So let's do this one from Python 3.14.
हाय हाय हाय, हेलो आर्यन, क्या चल रहा है यार? तो वाह, सारे गलत निकले क्या? कॉपी कमांड, कॉपी भी नहीं मिल रहा। Now this is getting a bit frustrating. The following line in the command, the docker tells, open the docker file, look for copy command. कॉपी कमांड तो ये ऑप्ट में जाएगा. Based on the given docker file, which instruction defines the command that starts the application when a container is started? Excellent. Now we can look for grep command as well, कि grep command हमारा कहाँ पर है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे, राइट, यहाँ पे if we copy this thing, searches for lines that match a pattern. I, case insensitive. So we can search for something like grep dash I
What can we search for? Python app.py. Maybe we can look for ports. Expose command. Cat command. So let's cat the Docker file then, right? Cat dash root dash web app Yep, got it. Exposes 8080. Build a Docker image using the Docker file and name it web app color. Do not specify a tag. Image name. Let us just share it on Twitter as well. What do you think? Now we can check. I thought the Docker image was built. That's weird.
maybe we can now check. ठीक है. Run an instance of image web app color and publish port 8080 on container on 28282 on the host. Okay, so container अपने को बनाना है एक, and we have to publish that as well. So how did we use कैसे हम container कैसे बनाते थे? We have to see that thing. How? We have to use this command, right? docker run -p. वाह, आज तो एंगेजमेंट ही गिरा दी यूट्यूब ने. क्या हो गया ऐसा? Maybe there's some What is the base operating system used by the Python 3.14 for image? If required, run Ubuntu instance to figure it out. How about this is something new. Debian, it is in Debian. That's really big Docker image. Docker images are supposed to be small and lightweight. Let's aim to trim it down. Okay. Build a new small Docker image by modifying the same Docker file and name it. Target light. Find smaller base image. Okay. In the web app directly run the lsl command and list the Docker file. Okay, let me just check this out. Let me just एक second now. Hi everyone, hi, welcome to the stream.
and hi. So right now we are learning Docker, and right now we are stuck on a problem. Okay, so in the web app color directory run the lsl command to list the Docker file and other files as well. हाँ ठीक है, so this is Docker file and other files as well. So we'll do l hi Obito, hi, welcome to the stream bro. Hi, कैसा, क्या हाल चाल, क्या पढ़ रहे हो आज भाई आप? I was a bit tired yesterday to stream, so मैं कल आ नहीं पाया stream में. Right now I'm learning Docker, not building anything else. So hi buddy. ऑफ टॉपिक BPIT का ऑन कैंपस प्लेसमेंट बेटर है ना BVC वैसे जस्ट से I'll answer later after a while. ठीक है. So and modified Docker to use Python 3.14 Alpine image and then build using Docker buildx. I mean ठीक है, लाइट वेट इमेज को करना तो है तो सो व्हाट शुड आई डू, लाइक आई विल प्रॉब्ली रन द विंड कमांड. ठीक है, अब हम विम में आ गए. कूल. वी आर गोइंग टू यूज 3.14 अल्पाइन. insert mode ना, we're in the insert mode right. हाँ, अब insert mode में हम लोग, yeah, alpine image, and then we are building it using, I'm still reading this as my, क्या हुआ, is anything wrong mode right. Is anything wrong? Okay, now we are going to save it. How did we used to exit? Okay, wait. We're gonna exit it. Just a second. How did we exit a Vim file? Wait, I just forgot it. How to exit a Vim file and save the changes. So :W, I'm not able to see the live chat you are reading. I think there is some problem. Wait, I guess there's some problem. एक बार ब्रो स्ट्रीम को वापस खोल के देखो, मैं देखता हूँ if there's some chat error. Nope, I don't think so. कोई एरर है मेरे एंड से. एक बार तुम वापस स्ट्रीम खोल के देखो यार, हो जाना चाहिए. दिस शुड गेट फिक्स्ड. ठीक है, सो प्रेस एस्केप and then we can type :WQ. Right, now we can run docker buildx, but मुझे docker buildx कमांड्स के बारे में नहीं पता था कुछ. build-t web app color, ये क्या था? This is some error from YouTube site. Yeah, I mean it may be. तुम फ़ोन में देख रहे हो क्या स्ट्रीम भाई?
तुम ये बताओ, what did you learn today? How was your day? Yep. Now I'm getting it. No PC. पर तो होना ही चाहिए था यार. I don't know क्या दिक्कत हो गई. कोई नहीं. This module took a bit of time to set things. Okay. I mean, yeah, if we look at Docker images, we can see that हमारी Docker image ना reduce हो चुकी है. So it's a very common way to optimize your Docker files. Okay. I learned about error handling in JavaScript. That's great, bhai. That's great. We can. That's nice. We try catch सीखा होगा ना. Run an instance of new image, web app color light, and publish port 8080 onto the container. ठीक है. Docker run web app color. I am thinking to start streaming my games as well right now. -t. And यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ. This is very common. Yes, try catch. That's great, bhai. That's great. What do you think? Do you have any project idea? Should I make anything? I was thinking to make my own YouTube. Like seriously, I was thinking to make my own YouTube. क्या लगता है? Should I make my own YouTube? Including the like, I'll make everything from myself. I'll try to use minimal AI, and I'll try to make even the transcoder service with my own. So yeah, we are done with our lab sessions. No issues faced, and we are over with it. Okay. I was looking at this news, by the way. If you can see. Wait. Let me just. Yeah, this one. This news. बढ़िया है ना? Now we can go back. You can, but if you are thinking to scale it, then maybe not. Obviously, I won't be able to scale it. If you have any other idea that can help the students, then I can make that as well. Like I was having this idea. एक मेरा दोस्त बता रहा था कि we have a lot of PG and all those stuff. Students come at any city and वो PG ढूंढते रहते हैं and they find it difficult. But I don't know. I think उसका solution already exist करता है. But पता नहीं. I may build it. पता नहीं. वो भी शायद अगर existing solution से अच्छा हो तो ही build करूँगा उसको मैं. Now we can have Docker Compose, Docker Storage. To be honest, I'm not. पता नहीं. Should I do another one? ये 2 घंटे की लैब थी. We can even move on to Docker Storage. So let's go on to Docker Storage. इतना एक्सप्लोर नहीं करता मैंने Docker Storage. So यहाँ पे just a second. Hi. Now I was a bit gone. Okay. Where are the files related to Docker containers stored?
अब मैं ये कैसे पता करूँ, मुझे तो पता भी नहीं है. You know what? Let's just plan to make on a project of little Docker. We can plan making a project. What do you think? I mean, मैं थक चुका हूँ code cloud से. I'm just tired. Maybe I can make something else, right? I had to do this thing. Docker compose वो चीज़ करनी थी मुझे. Let's see इसके कितने modules हैं एक बार. We can check that. We can check that. Only one session allowed at a time. ठीक है. I can stop it. Right, I can just stop it. And बहुत टाइम हो गया डॉकर कंपोज को पड़े हुए, so we can look at that as well. Okay, I'm gonna even upload a video today. Okay, so this video will be of mobile development. Let me just see. There used to be a YouTube channel of mine. ठीक है. There used to be a YouTube channel of mine जो कि मैं और मेरे दोस्तों का था, so called दोस्त. Let me just see. वो YouTube channel अब बंद हो गया, but mobile development, right? This is the final video. Yep, this is the final video of it. Mobile development. And I guess that is the thumbnail of it. Yep, I guess this is the thumbnail of it. Okay, I'll upload this video soon. Okay, this is a very informative video. You will like it for sure. ठीक है, I'll upload it soon. Is mobile dev roadmap different from full stack roadmap? Yes, it's a bit different. It's similar but it's a bit different. I'll share you everything about mobile development as well. भाई मेरा एक सो कॉल्ड चैनल था यार, मैं तुम्हें बताऊंगा उसकी कहानी कभी किसी दिन. बट इसलिए मैं बोलता हूँ कि गलत लोगों के साथ कभी काम मत करना, वरना यू विल रिग्रेट इट अ बिट. ठीक है. सो आई हैड दिस यूट्यूब चैनल. ओके, बट कोई नहीं, दैट्स ऑल राइट. आई विल शो यू समडे. ठीक है. और मे बी इफ़ आई कैन राइट नाउ, लेट मी जस्ट सर्च इट. एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट सर्च इट.
Yep, I am into this thing. Okay, that's nice. Just a second bro, just a second, मैं दिखा रहा हूँ. Okay, now hi. If you are still in the stream, let me just show you one thing. Okay. I think you're still in the stream, bro. Just let me know if you're still in the stream. I had to show you something. So this is the whole thing. Right now, let me just show you. Okay. So this is the roadmap that I was talking about. Okay. This is the roadmap I was talking about. I'll sooner or later update this as well. Okay. And for sure I'll just upload it. I think this is editable as well. I guess. So this is the overall mobile development का roadmap. ठीक है. You can just have a look at it. मैंने आप पूरा चीज़ यहाँ पे मैंने बता रखा है. If you wanted, I can even provide you this as well. So like ठीक है. Let me just see इसको मैं कैसे तुम्हें provide कर सकता हूँ. Hopefully okay, yeah, this is editable. Thank God. This is editable. मेरे पास एक्सेस है इस चीज़ का. कुछ तो उन दल्लों को नहीं दिया मैंने कम से कम. बढ़िया है. Okay, I'll soon provide you this thing. Don't worry. ठीक है भाई. I have completely explained that thing. ये बकवास है, इसको छोड़ो. ठीक है ना. I'll soon provide you. ठीक है. Okay, so we were on Docker. We were on Docker Compose. First created Docker network named ClickNet. This should be a bridge network. How did we used to create a bridge network in Docker? Do we even remember what's a bridge network? Do we even remember ये क्या है भाई? All cool. ए आरुष भाई क्या हाल चाल? क्या बात है भाई, क्या चल रहा है यार? ठीक है भाई, तो बताओ कैसे हम डॉकर नेटवर्क बनाते थे. डॉकर नेटवर्क, जस्ट अ सेकेंड. आई थिंक कुछ अपॉर्चुनिटी आ रखी है पॉड में, तभी लोग बात कर रहे हैं. कुछ तो चल रहा है. हाँ तो ठीक है. दिस शुड बी अ ब्रिज नेटवर्क. सो लेट वी कैन इफ वी summarize our knowledge. So how can we create a bridge network? The command was docker network and then we had to create. So it's clicknet. Clicknet and मतलब bridge network, right? It had to be a bridge network. ठीक है. So now we can docker network ls. ठीक है. तो what's this? 88b. It's a bridge network. ठीक है. By default वो bridge network ही बन के आया है आपका. ठीक है. So we are good to go. Code cloud is pretty awesome. I also use it for learning at the Gurugram basement. Well. हम दोनों सेम ही दो जगह से थे.
it is good भाई, it is good. I am trying it out. I am at the last module right now, तो it's pretty cool. बढ़िया चीज़ है यार. डॉकर कंपोज पे हूँ, मतलब बहुत इन डेप्थ मैंने डॉकर पढ़ा है मैंने इसी के थ्रू. अमेजिंग शिट. Create a Redis database container named Redis using the image Redis Alpine running in the background. Attach it to ClickNet Docker network that you have created in the previous task. Is the Redis container running? So like हमें कंटेनर बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक अगर कोई डॉकर इमेज एग्जिस्ट करती है क्या. राइट नाउ देयर एग्जिस्ट डॉकर इमेज. सो डॉकर रन docker run -t redis, but we had to use redis alpine. docker तो एंड पॉइंट है ना फुल स्टैक में. हाँ भाई कह सकते हैं docker इज एन एंड पॉइंट. तो कुछ नहीं होता यार. docker is used to run containers. okay, बेसिकली तुम जब आगे पढ़ोगे ना डॉकर के बारे में, डॉकर इट्स नॉट अबाउट ओनली कंटेनर्स, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक तुम डिप्लॉयमेंट में कैसे चीज़ें मैनेज करते हो. ठीक है. राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई गेम. भाई 50% डाउनलोड हो चुकी है. आई विल बी प्लेइंग वॉच डॉग्स 2. ठीक है. सो वी कैन चेक दिस आउट. डिटैच्ड मोड. ठीक है. डॉकर रन -d. डॉकर एंड पॉइंट नहीं होता यार, बहुत चीज़ें होती है. वी हैव फुल स्टैक में तो भाई बहुत चीज़ें आती है यार. अकेले तुम इसको नहीं कह सकते हो कि दिस इज सम एंड पॉइंट. अगर अल्पाइन इमेज नहीं तो पुल करेगा वो. पुल कर रहा है वो. ठीक है ना. फिर वो चेक करेगा. देयर इज नो एंड पॉइंट बडी. एग्जैक्टली. कर्नाटक भाई ने एकदम सही कहा है. देयर इज नो एंड पॉइंट एज सच. मेरी जॉब लग गई है. स्टिल देयर इज नो एंड पॉइंट. आई एम स्टिल लर्निंग राइट. देयर इज नो एंड पॉइंट एज सच. अरे क्या हो गया इसको. नाउ क्रिएट अ सिंपल कंटेनर नेम्ड क्लिक काउंटर यूजिंग इमेज code cloud click counter. Attach it to click counter network from the earlier task and then expose it to host port 8085. The click counter app runs on port 5000. ठीक है. मुझे जरा समझने दो क्या हुआ यहाँ पे. हमने एक नेटवर्क बनाया यहाँ पे, ब्रिज नेटवर्क है. ठीक है. ऑब्वियसली वी नीड टू क्रिएट अ ब्रिज नेटवर्क फॉर दिस थिंग. ठीक है. अगर हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ है. ठीक है. अब फिर हमने क्या करा, हमने रेडिस वाले हमने इसको रन करा है. ठीक है. उसको हमने अटैच करा है क्लिकनेट के साथ. ठीक है. ओके. सो फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट वी क्रिएट. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अनदर कंटेनर नेम क्लिक काउंटर. हाँ ठीक है. कोल्ड क्लाउड क्लिक, मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, बट ठीक है. लेट्स जस्ट मेक द इमेज docker -t -name click counter. ब्रो प्लीज़ गिव मी अ रेफरल. अरे यार आर्यन भाई आपको क्या रेफरल दे यार, आप हमें रेफरल दो. कैसी बात कर ली यार ये. मुझे डेवऑप्स में घुसना था. क्या कर रहा हूँ मैं ये सब. ठीक है. सो नेम क्लिक काउंटर यूजिंग द इमेज. अटैच भी करना ना अपने को. सो डैश नेटवर्क क्लिकनेट नेटवर्क से मैं इसको टच भी करना है. सो वाओ, अब जाके लोग आ रहे हैं. 5 लोग आ गए स्ट्रीम में.
हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीम गाइस। बहुत लेट कर दे आने में यार, नींद आ रही थी मुझे, ऑलमोस्ट सोने वाला था मैं। क्लिक नेट अटैच टू क्लिक काउंटर नेटवर्क फ्रॉम अर्लियर टास्क, देन व्हाट इज दिस लैब अबाउट? दिस इज अबाउट ब्रो डॉकर पूरा, लाइक सी कोड क्लाउड इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रैक्टिस डॉकर। ठीक है, हियर इफ यू गो यू कैन प्रैक्टिस एनीथिंग, यू कैन चूज वट एवर लैब्स यू लाइक। जैसे यहाँ पे, ठीक है, हाय 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 पीयूष, हेलो, क्या हाल चाल। ये देखो, दिस इज़ द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे अगर आपको हैंड्स ऑन चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, जैसे यहाँ पे डॉकर के प्रीरिक्विजिट्स हो गए हैं, क्यूबरनेटीज़ की लैब्स हो गई, यू कैन एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग। थैंक यू पीयूष, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच ब्रो। एंड यहाँ पे एंसिबल, यू कैन इवन प्रैक्टिस एंसिबल एंड पाइथन प्रोग्रामिंग भी है अपने पास। तो वट एवर, लाइक लेट्स से आई एम राइट नाउ डूइंग दिस लैब, ठीक है, आई एम डूइंग माई डॉकर लैब। एंड हमने देखा था, ये सब चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली थी। राइट नाउ आई एम ऑन this thing, docker compose. Now after doing docker compose, I'm gonna make some hands-on project. We'll be done with docker, and then we are going to start with aws. Okay, we are going to start with aws. I may do this certification as well. और you know what, एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? ओ नॉट दिस, यप। अभी मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, डॉकर पढ़ रहा था, सो इट्स ऑलमोस्ट डन। ये करूँगा, प्रोजेक्ट बनाऊँगा, हैंड्स ऑन हो जाएगा, फिर जाके आई एम गोना लर्न क्यूबरनेटीज़ और आई मे लर्न AWS थोड़ा सा और इन डेप्थ में। मैंने पढ़ रखा है, बट थोड़ा इन डेप्थ मुझे पढ़ना है। सो लेट्स जस्ट सी कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक यार डन, आई विल बी डन विद DevOps एज वेल, थोड़ा बहुत हो जाएगा एंड वी कैन मूव ऑन टू सम एनी अदर थिंग। ठीक है, सो वी वर ऑन दिस क्वेश्चन, वी ऑन दिस प्रॉब्लम राइट नाउ। तो एक तो साला समझ नहीं आता क्या है ये पोर्ट का चक्कर, समझ नहीं आता मुझे भाई कि कौन सा होस्ट, मतलब क्या है ये, होस्ट इज़ टू कंटेनर या कंटेनर इज़ टू होस्ट है, समझ नहीं आता मुझे। मतलब ठीक है, देखो डॉकर डैश टी नेम सही डाला, नेटवर्क सही डाला, अच्छा ठीक है, डैश पी मुझे करना था। तो अभी देख लेता हूँ जो क्या है इसका कन्फ्यूजन। 8085 इज़ टू 5000। अब 8085 जो था वो होस्ट पोर्ट था, तो ये होस्ट इज़ टू कंटेनर होता है। ठीक है, तो ये होस्ट इज़ टू कंटेनर होता है। 8085 ये होस्ट इज़ टू कंटेनर, कंटेनर ये हो गया 5000। ठीक है, और कोड क्लाउड डैश क्लिक काउंटर। ठीक है, अनएबल्ड शॉर्ट हैंड फ्लैग डी, क्या एरर हो गई? आर्ग्यूमेंट मिस कर रहा हूँ क्या मैं शायद कुछ? एम आई मिसिंग एनी आर्ग्यूमेंट एज सच? करेक्ट कमांड विल बी दिस, वाई, और इन वन लाइन डॉकर रन डैश टी नेम क्लिक काउंटर। एक सेकेंड, मेरा गेम इंस्टॉल होगा। वॉच डॉग्स खेलूँगा। एनीवन नोज अबाउट वॉच डॉग? तो यहाँ पे हाउ इज़ वॉच डॉग्स एक्चुअली, मुझे जानना है, बताओ मुझे। डॉकर रन, शेट, रन कमांड ही नहीं करी मैंने अब, बहुत बढ़िया। ठीक है, वी हैव पुल्ड द इमेज एज वेल। Now we can check. This lab is taking pretty much time. You can now access the application using click counter tab. Okay, now we can access this thing. See, we can access the application as well. This is good, I guess. And okay, I'm able to access the application as well. Let's clean up the resources created in the previous tab. Delete the Redis and click counter content, and then with the click connect the network you had created. भाई तो इसका आपका पूरा वही है, डॉकर RM करना आपको, डॉकर RM डैश F। बट ये डैश F क्या होता है मुझे जानना है। वेट I'll just search this out. Okay, I'll just search this thing out. What's dash F? What is dash F here? I think bro, which mic are you using? Hey, I'm using Mauno. So I'll provide the link in the description later on. या फिर तुम्हें चाहिए तो भाई just subscribe the channel. I'll soon make a video as well. मेरे दोस्त ने मुझे recommend करते इस mic को, so it's
माउनो का कुछ माइक, आई जस्ट लीव द लिंक। वेट एक काम करो, रुको भाई रुको, अभी तुम्हें बता देता हूँ, 2 मिनट। जस्ट लुक एट दिस थिंग, इफ़ यू आर देयर, माउनो माइक, ठीक है, आई शो इट, इट्स वेरी पॉपुलर, ठीक है। एक सेकेंड, कंडेंसर माइक है, मैं इसका नाम भूल गया भाई, एक सेकेंड, मैं अब लेट मी जस्ट लुक एट इन माई ऑर्डर्स, ठीक है। या दिस इज़ द माइक, ठीक है, माउनो AU-A04। रुको, मैं इसकी तुम्हें लिंक भी बनवा के दे देता हूँ, ठीक है। दैट्स द लिंक, यू कैन check the product out. Okay, here, that's my mic, okay. Now resuming to Docker. Thanks. Yeah, that's okay buddy, subscribe the channel, and yeah, let's see what we come up with ahead. So Docker will stop the container and remove the container immediately, ठीक है। So -f flag stands for force, तो ये forcefully remove कर देगा उसको, ठीक है भाई, करो forcefully remove आप। और फिर हम ठीक है, टू डिलीट द नेटवर्क वी नीड docker network rm client, docker network rm client, क्लिक नेट, ठीक है, सब उड़ गया। नाउ वी कैन टेस्ट दिस आउट, let's test it। yep, done। You saw how we created a docker, bye, I am leaving, oops read। okay bro, no worries, see you in the next stream भाई, कोई दिक्कत नहीं, no worries bro, thank you for being with me। You saw how we first created a docker network and attached containers to it, and docker creates, we okay, first move to click counter directory। now we will use the below compose file, ठीक है। हाँ, we have to create the compose.yaml file in the dash root / click counter, हम ठीक है यहीं पर ही, once then bring up the stack using docker compose, ठीक है। the compose file must have exact specification, redis service, click counter and this, ठीक है। now we have to create this thing, ठीक है, vim compose.yaml, and we're gonna paste this thing, escape :wq, ठीक है। now we can check this thing, okay, this is the command to run a compose file, ठीक है। docker compose up -t, compose up -t, ठीक है, this is good, okay। instead of manually creating networks and running several docker run commands, compose automatically created the required network, connected the containers together and started in the correct order with single command docker compose up, ठीक है। सो इफ समराइजिंग दिस सेशन, हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे पहले एक नेटवर्क बनाया, फिर हमने इसका खुद का क्या कहते हैं, हमने 2 इमेजेस को रन करी, उनके कंटेनर्स रन करे हमने, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने हटाया, हमने कहा भाई हमें ना एक ही कमांड, हमें ना, हम चाहते हैं कि एक ही कमांड रन करें, ऑटोमेटिक जैसी चीज़ें, फालतू में इतनी कमांड क्यों रन करनी है ना। सो हमने उसके लिए क्या करा, हम लोगों ने एक कंपोज फाइल बनाई, ठीक है। इस क्लिक काउंटर में जाके,
ठीक है, यहाँ पे हम गए और हमने यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड करी, रेडिस की इमेज होगी, क्लिक काउंटर की इमेज होगी, पोर्ट्स होंगे अपने पास, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी, ठीक है। एंड देन हमने अपनी चीज़ को मैनेज करा और ऑटोमेट करा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस स्ट्रीम आई गेस। वी आर डन विथ डॉकर, ठीक है। ऑफिशियली वी हैव प्रैक्टिस्ड एनफ लैब्स कि अब हम डॉकर को ख़त्म कर सके। दिस इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन। स्टोरेज बच रहा है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, डोंट थिंक सो, क्योंकि इट्स अबाउट डॉकर वॉल्यूम के बारे में। तो आई विल डू इट सम अदर डे जब मन होगा तो, ठीक है। सो दिस इज़ इट एंड आई गेस नाउ वी आर डन विद ओवरऑल डॉकर एंड आई मे मेक सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मैं वही सोच रहा हूँ, एक स्ट्रीम में इट्स लाइक हु द हेल विल कम एंड वॉच डॉकर की स्ट्रीम, लाइक कोई नहीं, कौन ही पागल होगा जो डॉकर की स्ट्रीम देखेगा। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स, DevOps prerequisites, more Linux commands. Oh, Python install, Java introduction. It's a sword, भाई। ठीक है, so now we can focus on making the projects, ठीक है। now क्या बताऊँ अब मैं, there was this one order I was following to learn Docker. Let me just see that. ठीक है, नेटवर्किंग इज़ डन, डॉकर इज़ डन। फिर हमें लाइनक्स पढ़ना था, लाइनक्स भी हमें आता ही है थोड़ा बहुत, AWS, क्यूबरनेटीज़, ये सब, ठीक है यार, ठीक है। दैट दिस कैन बी डन, वी कैन मेक सम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स एंड देन वी कैन गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक सो? 3-tier application with Docker Compose, deploying a web application with Nginx and MySQL, ठीक है, we can see that as well. एक सेकेंड, भाई व्हाट इज़ डॉकर? ओह, सो आपको डॉकर नहीं पता? सो डॉकर ओके, सो बेसिकली मैं बताता हूँ डॉकर क्या होता है। डॉकर इज़ बेसिकली इट you know it solves the problem of containerizing applications, ठीक है। earlier we used to have this problem of, maybe let's say we have an application of Node.js, ठीक है, और we have some Java application। पहले क्या होता था, it didn't used to work on some other operating system like Mac। विंडो में चल गया लेकिन मैक में नहीं चला, मैक में चल गया लेकिन विंडोज़ लिनक्स पर नहीं चला। तो इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाली प्रॉब्लम, लाइक इट वर्क्स ऑन माई मशीन, आई डोंट नो हाउ डज इट नॉट वर्क्स ऑन योर मशीन। सो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए डॉकर आया अपने पास, ठीक है। डॉकर ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा एंड मतलब पहले डॉकर आई गेस कुछ और नाम से जाना जाता था, आई थिंक सो। एक सेकंड में देखता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डॉकर पहले, हाँ ये था यहाँ पे, ठीक है। इट वाज रिलीज इन 2013, ये ओपन सोर्स था पूरा का पूरा, ठीक है। सो बेसिकली इट्स यूज फॉर डिप्लॉयमेंट, यू कैन रन मल्टीपल कंटेनर्स एंड उनको तुम डिप्लॉय कर सकते हो। बेसिकली इट्स यूज टू स्केल एप्लीकेशंस एंड क्यूबरनेटीज़ उन्हीं कंटेनर्स को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। ऑटो स्केल करता है, ऑटो स्केल फीचर होता है, कह सकते हो, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग कि कैसे डॉकर और क्यूबरनेटीज़ रिलेटेड है आपस में, ताकि तुम समझो कि डिप्लॉयमेंट में कैसी चीज़ें काम आती है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी रियल वर्ल्ड कंडीशन, लेट्स से तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है, तुम्हारी ना कोई LMS एप्लीकेशन है, लेट्स से तुम्हारी एप्लीकेशन जो है ना वो असेसमेंट कंडक्ट करवाती है। असेसमेंट यानी कि इफ़ आई एक्सप्लेन यू, लेट मी जस्ट गो टू एक्सकैलिड्रॉ, एक सेकेंड ना भाई। सो एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी दिस, मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूँ। खुल जा, क्या दिक्कत हो रही है?
ब्रदर सिंस यू हैव बिन कोडिंग एंड बताता हूँ भाई, बताता हूँ, पहले मैं इनकी प्रॉब्लम बताता हूँ. एक सेकेंड यार, what the hell is happening? ओके, ठीक है. सो ब्रो, लेट्स से यू हैव दिस प्रॉब्लम. तुम्हारे पास लेट्स से एक एप्लीकेशन है तुम्हारी, LMS की तुम्हारी एप्लीकेशन है, ठीक है, एक LMS की तुम्हारे एप्लीकेशन है. एंड लेट्स से भाई एकदम से ना ट्रैफिक हिट कर गया तुम्हारे एप्लीकेशन में. लाइक यूजली 200-300 लोग आते थे, बट एकदम से तुम्हारे पास ना सडनली 500 लोग आ गए. या लेट्स से एक दिन में 5000 लोग आ गए, तुम्हारी ऐप वायरल हो गई, ठीक है. अब रिक्वेस्ट आ रही है बहुत से तुम्हारे सर्वर पे, ठीक है. तो क्या होता है, यू हैव मल्टीपल कंटेनर्स रनिंग, ठीक है. लाइक यू हैव मल्टीपल कंटेनर्स रनिंग. इन्हीं कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए तुम्हारा डॉकर होता है, ठीक है. सॉरी, क्यूबरनेटीज़ होता है तुम्हारा. तो क्यूबरनेटीज़ क्या करता है, ऑटो स्केल करता है, ठीक है. अगर यूज़र्स कम हो गए, अगर यूज़र्स हट गए, तो भाई तुम्हारे कंटेनर्स भी हट जाएंगे. ये ज़रूरत नहीं है तो ये हट जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट, ठीक है. जो भी कंटेनर्स हैं ये सब तुम क्लाउड में रन करते हो, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. सो ऐसा होता है कुछ, अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट डॉकर, इफ़ आई एक्सप्लेन इन अ वेरी नाइव वे. बाकी ब्रो, इफ़ यू स्टडी अबाउट डॉकर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. इफ़ यू स्टडी अबाउट डेवऑप्स तो इट्स अ बिट इंटरेस्टिंग एज वेल. तो देखना हाउ डज इट सॉल्व्स इट रन्स ऑन माई मशीन प्रॉब्लम, ठीक है. तो आई मीन दिस इज़ नाइस एंड स्पेशली डॉकर का आर्किटेक्चर खुद में बहुत इंटरेस्टिंग है. सो डू लर्न अबाउट इट भाई, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इफ़ यू लर्न. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन जो वो पूछ रहे थे, लेट मी जस्ट टेल अबाउट दैट थिंग एज वेल. Okay, so since when you have been coding and how do you improve your logic and problem solving? भाई सिंपल सी बात बताता हूँ. फॉर कोडिंग आई हैव बिन कोडिंग सिंस माई फर्स्ट ईयर, ठीक है. आई हैव बिन लर्निंग वेब डेवलपमेंट, बट मेरे लॉजिक इतने अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं आए. आई वोंट से कि मेरे लॉजिक्स अच्छे हैं, बट इट्स जस्ट दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जब जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट मोर बेटर, ठीक है. इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस प्रॉपरली देन तुम्हारे लॉजिक्स वीक रहेंगे. AI असिस्टेड कोडिंग करो, बट AI पे रिलेटेड मत हो जाओ, ठीक है. स्टार्टिंग में जब कुछ चीज़ सीखते हो, डू नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम AI, ठीक है. जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आई एम नॉट कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम AI राइट नाउ. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती, आई एम आस्किंग ChatGPT, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ AI, आई एम यूजिंग AI टू इम्प्रूव माई लॉजिक्स. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं AI पे पूरा डिपेंडेंट हो जाऊँ, ठीक है भाई. मैं AI पे डिपेंडेंट होना, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट. तो समहाउ कहीं ना कहीं यही आज भी सही आंसर नहीं दे पाता, ठीक है. एंड अगर तुम्हें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं एंड कोडिंग को इंप्रूव करनी है भाई, DSA करो, ठीक है. DSA, इफ़ यू हैव नॉट डन नथिंग जस्ट डू DSA. एंड इफ़ यू इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट तो भाई मेक एप्लीकेशंस, भाई मेक एप्लीकेशन, दबा के एप्लीकेशन बनाओ, खुद से बनाओ, ठीक है. मज़ा आएगा भाई बनाने में, बिलीव मी. इट्स वेरी वेरी नाइस, ठीक है. लर्न अबाउट बेसिक CS फंडामेंटल्स एंड ऑल, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओ वाह, यहाँ पे AWS की लैब भी है, देखो जरा. ओके, दैट इज़ नाइस. वाह, बिल्ड इंस्टाग्राम लाइक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन. डैम, दिस इज़ नाइस. एक बार चेक करूँ क्या इसको? आई जस्ट वांटेड टू चेक दिस थिंग. ये लैब, इसमें होगा क्या, इसमें हो क्या सकता है? थैंक यू भाई फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम, ठीक है. लेट्स सी दिस थिंग देन वी कैन जस्ट गो, क्योंकि मुझे ना आपके लिए वीडियो भी अपलोड करनी है. सो आई विल डू दैट सून एज वेल. यप, आया नहीं अब तक, ठीक है. इफ़ एनीथिंग एल्स, ओके, दिस इज़ द थिंग. वेट, वेलकम टू द AWS लैब. वाह भाई, दिस इज़ सो कूल भाई, दिस इज़ सो कूल. Welcome to for this lab. Damn. Show creds command anytime to retrieve these credentials. Damn bhai. Technical architecture. Bhai, this is so cool bhai. No bhai, no way this is free bhai. No way this is free. I mean, भाई ये फ्री कैसे है ये चीज़ें? लाइक these are so good things and amazing shit. भाई ये फ्री कैसे है? I'm still thinking like how the hell is it free? Come on भाई, this is literally gold. चलो सही है फिर. I look for some projects on Docker and we'll be then back on the next stream, ठीक है यार.
विल मेक सम एप्लीकेशंस मे बी, और मैं डॉकर की ऐसे ऐसे कोई अलग से स्ट्रीम नहीं करने वाला हूँ, बट आई एम गोना मेक सम एप्लीकेशंस में डॉकर हम यूज़ करेंगे. We'll make some projects, and yeah, we'll make our DevOps resume as well. After that, we are gonna even learn a bit Linux maybe. Okay. So okay, it means that when we write one line in a project, then how do we know that second line should be written like this? देखो यार, if you are working on some web development project, ठीक है, if you do not know anything, भाई you just chat GPT it, ठीक है. If you are making, let's say if you are making a URL shortener, ठीक है भाई, you have to just wait a second यार, मैं जरा स्ट्रीम ओवर ही होने वाली है, आई एम जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं आई एम आंसरिंग इट, ठीक है. हाँ, सो इफ़ यू आर मेकिंग एनी URL शॉर्टनर या एनीथिंग यू आर मेकिंग, नाउ यू वांट टू आस्क चैट GPT कि भाई मैंने ना आई वांट टू मेक दिस URL शॉर्टनर, तो यू विल आस्क व्हाट आर द बैक एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट, कितनी APIs बनेंगी. यू डोंट जंप इनटू स्ट्रेट कोडिंग, यू समटाइम्स डिसाइड कि तुम्हें कितनी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें DB स्कीमा क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, लाइक यू वांट टू नो व्हाट्स योर DB स्कीमा, व्हाट्स योर API, कितनी APIs तुम्हारी होंगी, ठीक है. सो यू सी दैट थिंग एज वेल, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. आफ्टर दैट यू डिसाइड टू कोड, एंड जब तुम कोड करते हो, जस्ट आस्क चैट GPT कि मुझे क्या करना है. सिंपल एज दैट. मुझे समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताना, ठीक है. एंड नहीं भाई, मैंने अब तक फ्रीलांसिंग नहीं करी है यार, मतलब एक मैंने करी है, बट वो ऐसे रेफरल के थ्रू मुझे मिला था, वो मेरे फ्रेंड के थ्रू. तो या फ्रीलांसिंग में घुसना तो भाई फ्रेंड के थ्रू ही घुसना पड़ता है आजकल. ऐसे अगर आप अलग से अपवर्क या फाइवर में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने में, फर्स्ट या सेकंड क्लाइंट ढूंढने में. अदरवाइज इट्स ऑल्सो गुड प्लेटफॉर्म. फाइवर तो अच्छा प्लेटफॉर्म, मेरे दोस्तों को फाइवर से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी है. सो ट्राई फाइवर, आई वुड से. फाइवर मुझे भी ट्राई करना है, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम, ठीक है. सो एनी अदर क्वेश्चन किसी और को? मैं फिर स्ट्रीम एंड कर देता हूँ, ठीक है. ब्रदर आई एम न्यू टू कोडिंग, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स. ठीक है यार. विच ईयर आर यू इन? आई वुड से भाई जस्ट स्टार्ट विद, इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर भाई, जस्ट स्टार्ट विद DSA, ठीक है. अगर DSA में मज़ा नहीं आ रहा तो जस्ट चूज़ अ नीश जिसमें तुम्हें कोडिंग करनी है, मे बी वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट और मे बी AI/ML, ठीक है. जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग, अपने लॉजिक्स अच्छे से बनाओ, ठीक है. पाइथन लर्न कर रहे हो, यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप. देन यू कैन लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ पाइथन, ठीक है. पाइथन में तुम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, DSA करो, तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. एंड पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ, उतना अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ज़्यादा. सो मेक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पाइथन, और आई वुड से इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है. अभी इतना करो. प्रोजेक्ट बेस्ड, हमेशा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना भाई, हमेशा, वरना तुम वीडियोज़ ही देखते रह जाओगे, एंड that's when you will be stuck in tutorial hell. So try not to do that, ठीक है. Thanks bro, you are kind, love you from Pakistan. Thank you भाई, thank you so much यार. Do share my channel if कोई एक और ऐसा बंदा है जो कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं. आई वॉन्ट ऑल द, आई एम सून प्लानिंग टू मेक अ कम्युनिटी ऑफ कोडर्स एज वेल, जो कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे. सो आई विल सून मेक दैट कम्युनिटी एज वेल. डू लेट मी नो कि उसको कहाँ बनाऊँ, ट्विटर पे या डिस्कॉर्ड पे, आई विल ऐड यू एज वेल, ठीक है. तो अभी 100 सब्सक्राइबर होने दो, फिर मैं बनाता हूँ उस कम्युनिटी को, ठीक है. ओके देन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच भाई, ठीक है. एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, टाटा, बाय बाय, गुड बाय. एंड आई विल अपलोड दैट मोबाइल डेवलपमेंट वाला रोड मैप by today or tomorrow latest, ठीक है. Okay then, thank you so much, thank you for being with me.